Assalamu alaikum. Welcome to the Sterling Learning channel. This is the second lecture of Numericals of Physics Matric 10th, and my name is Zubair Rasheed. I'm an electrical telecom engineer, a graduate of NUST. और अभी हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 10 मैंने लास्ट में करवा दिया था. अभी मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैं उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करूँगा, क्योंकि मैं दोनों ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ. जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको भी, जो स्टूडेंट्स उर्दू में पढ़ते हैं उनको भी. लास्ट लेक्चर की तरह जिस तरह मैंने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स किए थे, उसी तरह हम पहले उसके फार्मूलाज जो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर जो पॉसिबल फार्मूलाज यूज़ होंगे वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साउंड. चैप्टर नंबर 11 है, साउंड इसका नेम है. बिफोर जंपिंग इनटू न्यूमेरिकल्स वी विल राइट फार्मूलाज यूज्ड इन दिस चैप्टर. Sound intensity is denoted by I and it has a relationship with sound level, also known as sound intensity in dB. जो sound level है उसको sound intensity in dB भी कहते हैं. उसका relation ये है कि 10 multiplied by log of I over I naught. इसको कहते हैं intensity level in dB और simple sound level भी कहते हैं इसको. ये intensity level भी कहते हैं इसको simple. Where I naught is the faintest hearable साउंड इंटेंसिटी विद द वैल्यू ऑफ 10 पर माइनस 12. ये सबसे जो कम तरीन आवाज़ हमें सुन सकती है, ये आई नॉट वो वैल्यू है. 10 पर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर है इसकी वैल्यू. द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिलेशनशिप, ये जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. इसमें लैम्डा वेवलेंथ है, एफ फ्रीक्वेंसी, वी वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप एस इज इक्वल टू वी टी होता है. डिस्टेंस होता है, वी वेलोसिटी एंड टी टाइम होता है. चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11.1. हमारे पास वैल्यू क्या है इंटेंसिटी की? आई जो है हमारे पास वो है 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर. अब हमने बताना है इसकी डीबी लेवल में. तो क्या फार्मूला है हमारे पास इंटेंसिटी डीबी लेवल में? डीबी लेवल 10 log of I over I naught. 10 log of I जो है 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 है, और 3 ये है 10 पावर माइनस 12. जब इसको सॉल्व किया हमने तो 10 log 3 इंटू 10 पावर 6 आ गया. तो इसका जब लॉग लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डीबी लेवल की वैल्यू आ जाएगी. तो क्या कर, जब हम इसका लॉग लेंगे 10 इंटू इसका लॉग का आंसर आता है 6.477. तो जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 64.77 आपके पास आ जाएगा. तो ये डीबी लेवल में इंटेंसिटी आ गई. ठीक हो गया. इसके बाद हमारे पास उसने इसी क्वेश्चन के बच्चे व्हाट इज इंटेंसिटी. अब डीबी में दिया हुआ उसने 100 डीबी दी हुई है. डीबी लेवल दिया हुआ और वो कह रहा है जो आपके पास हमने इसका इंटेंसिटी में लेके जाना है. तो वही फार्मूला होगा 10 log I ओवर 10 पावर माइनस 12. इसमें हमने I जो है वो हमने कैलकुलेट करना है. ठीक है,
इसके इस तरफ इसका आंसर जो होगा 100 dB है, तो ये 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 100/10 और log ऑफ I/10⁻12, तो 10 log ऑफ I/10⁻12 एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे। इसका एंटी लॉग लिया 1 × 10⁻10 आ गया इस साइड का, ये इसका आंसर आ गया। इस साइड का लॉग लिया, लॉग और एंटी लॉग कट गए, लॉग इनटू एंटी लॉग, तो ये आ गया आपके पास I/10⁻12। अब हमने I कैलकुलेट करना है, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I = 10⁻12 + 10 I/10⁻2 which is equal to 0, okay, sorry, it is equal to 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। पहले का आंसर हमारे पास ये है, दूसरे का आंसर हमारे पास ये है। दो पार्ट्स थे, दो चीज़ें उसने रिक्वायर्ड की थी, हमने दोनों कैलकुलेट कर ली हैं। 11.2 if at अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 dB, कह रहा है जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल ऑफ 80 dB है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। अच्छा, dB में दिया हुआ है, उसकी इंटेंसिटी, सिंपल इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेवल दिया हुआ है, लेवल और इंटेंसिटी लेवल 80 dB दिया हुआ है, तो हमने I जो इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I will use the same formula which is 10 log I over I naught. We know the value of I naught as I over 10⁻12. I naught is equal to 10⁻12, and the answer for this is 80 dB. Level equal to this, and we will have this, and this will, 10 is being multiplied here, and it will go to the other side, it will get divided, and it will be 8 dB on this side, and log of I over 10⁻12 on this side, and we will take the anti-log on both sides। एंटी-लॉग लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि हमने ये लॉग ख़त्म करना है। एंटी-लॉग 8 इज इक्वल टू एंटी-लॉग एंड लॉग I over 10⁻12. This will come as 10⁻8 I over 10⁻12. This will go there. I is equal to 10⁻12 into 10⁻8. I is equal to 10⁻4. Sorry, this will be the answer. 10⁻4, ये आपका जवाब आ जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद तीसरा है जी, एट अ
At a particular temperature, the speed of sound of in air is 330 मीटर. दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन. वो हमने पहले भी इस तरह के सवाल किए हुए हैं. ये v इक्वल टू एफ लैम्डा से सिंपली सॉल्व हो जाएगा. इसमें कह रहा है जी स्पीड ऑफ साउंड, हम साउंड की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड है नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकंड, और उसके साथ हमें क्या चीज़ दी हुई है, इक्विवेलेंट लैम्डा जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब है 5 इंटू 10⁻² मीटर. तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन ऑडेबल रेंज. अपने इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है. f इज इक्वल टू दिस एंड हमने बताना है इज इट ऑडेबल. तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे. v इज इक्वल टू f lambda. We need to calculate f, so f will be v over lambda, जिसमें v की वैल्यू क्या है हमारे पास 330 over 5 into 10⁻². इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6600 हर्ट्स. इसको हम अगर किलो हर्ट्स में लेके जाएं, दिस इज इक्वल टू 6.6 किलो हर्ट्स एंड इट इज also audible. ओके, इसके बाद हम करेंगे 11.4. रूटीन से चलते जाएंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स हैं हम वैसे वैसे आगे चलते जाएंगे. 11.4 और 11.4 जो है इसमें हमारे पास क्या चीज़ें दी गई हैं. डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स. नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, इसमें 11.4 के अंदर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डॉक्टर ने जो कैलकुलेट ऑब्जर्व की हैं वो 72 हैं इन 1 मिनट. तो टाइम हमारे पास आ गया 60 सेकेंड्स. वो हमारे से पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और साथ हमने बताना है टाइम पीरियड टी बताना है. तो फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था तो उसने बताया चैप्टर 10 के अंदर हुआ था कि फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ repetitions per 1 second, over 1 second. So we have 72 heartbeats in 60 seconds. So 72 by 60 is equal to frequency, and it will be 1.2 hertz or beats per second, and time is what, 1 over f. So we will have the time as 0.83 seconds.
So we have our two answers for the two questions asked by the 11.5. We'll have a marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo. 1.5 seconds later, echo received, delay. 1.5 seconds. Speed of sound in seawater. Speed of sound है जी हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड और आपने डेप्थ फाइंड करनी है. हमारा शिप है ऑन द सरफेस, ठीक है, और ये है सी बेड. Sound goes there, sound waves, and strikes here and comes back up. Round trip time, like when we hear the echo, it travels completely to the seabed and comes back to the ship. So round trip time is 1.5 seconds. One side trip time would be 1.5 by 2, which will be 0.75, and we have the formula for S is equal to Vt, velocity into time. For distance we can use this formula, S is equal to Vt, where S is equal to depth in this case, and V is the velocity, and the velocity is the 1500, and time is 7.75. Then S will comes as 1125 meters. This is the depth of our seabed. Now 11.6, same numerical, same type of question. Here also echo is discussed. Heard an echo after 5 seconds, echo delay 5 seconds, and डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ साउंड इज V is 346 meter per second. This is also round trip time. One-sided time, 5 by 2, which comes as 2.5, and S is equal to Vt. S is equal to V is 346 into 2.5, which comes out to be 865 meter. So S we have 865 meters. So just this. Now for the next question, a ship sends out ultrasound that returns from seabed and is detected after. Same question repeated 3 times.
Yes, repeated 3 times. 11.7, same question, just 3 different cases. One is the ship, second is the student, and third is the ultrasound ship, ultrasound waves sent from the ship. Okay, delay is here. I'm writing less and less details because I have already discussed it enough time for enough time. So if the speed is what, 1531, and distance, seabed distance we have to calculate. So S is equal to Vt, here T is equal to 3.42 by 2, T becomes 1.71, and here we will add this T. Velocity is 1531 into 1.71 equals 2618 meter. So this is the answer for this. This is the answer for this, and this is the answer here. .7 is done. 11.8. We have 11.8 as the highest frequency sounds humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in air at this frequency at temperature at 20 degrees centigrade? What is the wavelength? This is simplest. F is equal to F highest, FH highest human can hear is 20,000. I'm just writing this FH just to have the highest sound idea, and the FL is what, 20 hertz, and V for both cases is 343 meter per second. So we need lambda H and lambda L. Same formula, V is equal to F lambda, and we will have as our F as F equal to V over lambda. For FH, 343 over 20,000 comes out to be as 1.7 into 10 power minus 2 meters, and FL comes up to be as V over lambda 343 over 20, and it becomes like 17.2 meters. 17.2 meters. Now next is 11.9, and a sound wave has a frequency of 2 kilohertz. frequency है हमारे पास 2 kilohertz, which is 2 into 10 power 3 hertz for calculations, and wavelength is lambda is equal to 35 centimeter, which is 35 into 10 power minus 2 meters.
how long will it take to travel 1.5 kilometers? Distance is 1.5 kilometers, which is 1.5 into 10 power 3 meters. Now we need to calculate the time. First we need to calculate for this we need velocity v. So v is equal to f lambda, putting the values of f into 2 into 10 power 3 into 35 into 10 power minus 2. It comes out to be as 700 meter per second. These calculations are simple calculator based. If you multiply 35 into 270, and this will become as 10, and 70 to 10 700. And for time we will use s is equal to vt. Here s is d is equal to vt, and we need to calculate t. So t is equal to d over v, and d is 1.5 into 10 power 3, and velocity is 700, sorry, and the answer comes out to be as 2.1 second. So I think we are done with the chapter 11, and I hope that it helped you. And if it helped you, I hope that you would subscribe to my channel and give thumbs up to this video, and please you will share this video with your friends, so they may also get some help from this. And yes, that's all for now. In the next video I will be doing the chapter number 12, the numericals of chapter number 12, which is geometrical optics. So with the hope that this thing helps you. Thank you for now, and goodbye.